हे एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल कंसल्टेंट रिसर्च। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फॉरेंसिक अकाउंटिंग की थ्योरी में बात की थी, और हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने एक्सेल शीट में कुछ फॉरेंसिक अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करे थे आईटीसी के लिए, राइट? सो व्हाई फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी देन आई हाईली सजेस्ट यू ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में एंड कई बार माइक्रो कैप स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो उसमें हम फोरेंसिक एनालिसिस क्यों करते हैं एंड व्हाई इट इज़ क्रूशियल टू एनालाइज द फोरेंसिक्स, राइट? काफ़ी सारे रेशियोज देखे थे हमने। एंड वंस अगेन, अगर अभी तक आपने इक्विटी रिसर्च वाला सेशन नहीं देखा तो आई हाईली सजेस्ट यू टू वॉच द सेशंस फर्स्ट, राइट? हमने काफ़ी सारे रेशियोज देखे थे, ऐसे कुछ सी एफ अपॉन पैट देखा था। वी लुक्ड एट क्यूमुलेटिव सी एफ अपॉन क्यूमुलेटिव पैट फॉर द लास्ट 10 years. Volatility in depreciation rate, cash yield, or increase in receivables should be greater than or is greater than an increase in sales, then it's a red flag. Contingent liabilities as a percent of net worth, free cash flow generate हो रहा है या नहीं हो रहा, pledging by owners and your auditor report. आज हम सिर्फ एक्सेल की बात नहीं करेंगे, आज हम एक प्रोफेशनल लेवल की रिपोर्ट बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, राइट? फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट, इसका टेम्पलेट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, राइट? लेट्स गो इनटू द एक्सेल शीट नाउ। ये सारे रेशियो क्या होते हैं आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, राइट? आई विल सिंपली मेक अ रिपोर्ट। सबसे पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में जाना है एंड आई विल टैप फॉरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट। कोई सी भी कंपनी नेम डाली यहाँ पे, राइट? अभी मैं आईटीसी को कर रहा हूँ तो आईटीसी लिमिटेड, एंड टिकर सिंबल आई विल सिंपली गो टू माय screener. And once again, if you have not followed me on LinkedIn yet, then I highly suggest you to send me a connection request and I'll solve all your doubt as well. I'll simply type ITC. या तो आप बीएससी का सिंबल डाल सकते हो या तो आप आईटी एनएससी का डाल सकते हो। आई सिंपली टाइप ITC, राइट? नाउ अबाउट द कंपनी, मुझे अबाउट द कंपनी लिखना है यहाँ पे, राइट? आईटीसी के बारे में लिखते हैं। वंस अगेन मैं आई बी जस्ट क्विक, आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम हेयर, राइट? इवन तो ये आपकी रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, बट फॉर दिस सेशन आई विल सजेस्ट कि वी बी क्विक, राइट? एंड copy it, let's copy it from here, command C, command V, right? 80%. Okay, now I'll green format your, let me see what the format should be. Arial, right? Font is your Arial. No, Calibri body. Yep. So here we are. Let me just click this entire thing and give a nice formatting, right? यहाँ पे मैंने कंपनी का ओवरव्यू दिया है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू गिव अ brief overview of the company, right? Let's talk about some more about the ITC, right? Let's see what else we can add, right? Let's add about the business segments, right? I'll just add ITC, Calibri body, font black, includes your ignore all so that we get sure anyways. So this gives me a good brief understanding of the business segment of the ITC. Oops. Let's keep it like this, right? And I'll add a few images for ITC. ITC brands images. Let's say which image brand
Do we have the logo? No. Let's add the logo first. Let me just copy it. Command V, and we have the ITC image. Right. And let's look at the brands ITC owns. This one looks good. Copy, Control V, and we can paste it across over here. So it gives a visual cue what the business is selling, right? So this is the first page of your forensic accounting report. It gives you a basic overview of the company. Now let's talk about the forensic accounting, right? What is and why forensic accounting is important. Now मैं चाहता हूँ कि मेरा रीडर मेरे को ये समझे कि what is forensic accounting, why it is so important to analyze any business, right? Before we make an investment, accounting is important, right? So let me just make a few pointers. Looks good, right? Forensic accounting, the craft of identifying accounting potential accounting frauds, not accounting frauds, potential accounting frauds in companies. It also shows how the corporate governance of the company is, and it also tells an investor what to be careful about, careful of when investing. बिकॉज कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिख रहा होता है कि हो सकता है कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं होती। लेकिन फॉरेंसिक अकाउंटिंग आपको आगाह कर देगी कि what you need to be careful about, right? Command C, Command V. I'll just drag it across. Forensic accounting ratios. Right, so let's take a look कौन से ratios थे हमारे पास in the PPT. CFO upon PAT. Let's see if it copies. Yep, all good. Yep. Cash yield हमारे पास नहीं है अभी. Yep. So these are the ratios that we will be looking for in the report, right? So अब मैं अपने क्लाइंट को ये बता रहा हूँ कि भाई हम कौन कौन से रेशियो पे देखने वाले हैं. So let me just add a quick graph over here. Forensic accounting. So let's just add this one. Copy image, copy V, right? So it gives me a good understanding of the. I would just want to make sure that the report is good, right? So अब हम चार्ट्स वगैरह लगाएंगे एंड चार्ट्स वगैरह के साथ हम उसके ऊपर थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू द एक्सेल शीट. सबसे पहला वी हैव CFO upon PAT, right? So I'll simply let me just zoom out a bit. Select this, press command, select this, recommended charts. I'll go over here, right? Change the chart title. CFO divided by PAT for ITC. And I'll remove these lines and formatting, no outline. So I've removed the outline.
I'll just change the color. Do not want the color. I want a good color. This looks good. So I'll come Command C, Command V. Right, so we got it over here. Right, so over the years, ITC has given good CFO upon PAT, right? So first ratio gives me CFO divided by PAT. Now I want to give a बेसिक कमेंट्री ऑन इट, राइट? मुझको बेसिक कमेंट्री बनानी है इसके ऊपर कि सी एफ अपॉन पैट क्या दर्शाता है एंड वाई सिग्निफिकेंस इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? द फर्स्ट रेशियो that we have and which is probably the most important one is your CFO, cash flow from operation as a percent of PAT. This ratio shows me how much cash is actually being generated from profit after tax, right? So पहला ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. दिस रेशियो, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि कितना होना चाहिए रेशियो. दिस शुड बी अबव योर एटलीस्ट 60% एंड अबव, सॉरी, एंड फॉर अ मैच्योर बिजनेस इट शुड बी अबव 80%. दिस रेशियो शुड बी above 60 to 80% for a mature business. And in the case of ITC, this ratio is at healthy levels of 90% plus over the last 10 years, making sure the quality of earnings is high, right? So this is your commentary for CFO upon PAT. Now let's take a look at the other ratios that we have. Let me just Control C, Control V. Okay. What is some other ratio that we have? Your depreciation rate as a percent of revenues, right? I'll simply select this, command this, and insert recommended charts. Let's take this one. Remove formatting. Do not want an outline. No outline. So this gives me that the depreciation rate as a percent of revenue is quite stable. I want to change the color. Double click. Take this one. Looks good. Chart title. Depreciation as a percent of revenue. Command C. We have your Command V. All right. So let's make it smaller. Change the number. Depreciation as a percent of revenue.
So let me just, the second ratio that we have is depreciation as a percent of revenue. And I need to tell them why it is so important to keep this ratio in your mind, right? This ratio shows whether the company is keeping its depreciation assumptions, right? क्योंकि आपको पता है depreciation कैलकुलेट करने दो तरीके होते हैं आपका, एक रिटन डाउन वैल्यू एंड योर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, राइट? सो अगर बार बार कंपनी उन चीज़ों को चेंज करी देन इट्स अ रेड फ्लैग। एंड कई बार कंपनी अपनी एसेट की लाइफ्स को भी चेंज करती रहती है, जिससे डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू कम ज़्यादा होता रहता है। सो दिस शुड बी not the case, right? The depreciation as a percent of revenue should be stable for a mature business, and ITC is one hell of a mature business. Depreciation policy within lines and is not making any unfair assumptions about the asset lives and depreciation methods. So make sure that this ratio is quite stable, especially for a mature business, right? This is quite important for asset heavy businesses, right? ITCs, let's quickly take a look at what's the average. Equals average 2.86%. This is average depreciation as a percent of revenue is around 2.86% for the last 10 years, which is quite okay, right? So ये commentary मैंने की, आप इससे ज़्यादा commentary कर सकते हो, but for this session I'll keeping the commentary as low as possible, right? So Command D, I'll get another one over here and I'll just remove this one because we have a new slide and remove this one, right? So third ratio देखते हैं हमारे पास क्या है, capital work in progress as a percent of net block. This command, this insert this one makes sense. CWIP as a percent of net block. Now you might be thinking net block क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसके लिए इक्विटी रिसर्च वाला कोर्स देख लीजिए जाके। Wait, I need to change the color. Dark blue, and I want to remove this. Formatting, no outline. Command C, and we got the Command V. So let's make it a bit smaller. Capital work in progress, right? Now, 2, 3, we have your CWIP as a percent of net block, right? Let me just explain what is CWIP. CWIP is capital work in progress. This ratio shows how much
company is investing or invested in current work in progress plants, current work in progress plants, and how much growth they want to have, right? क्योंकि अगर बिकॉज ऐसा परसेंटेज CWIP ऐसा परसेंट ऑफ नेटवर्क की नेट ब्लॉक काफ़ी हाई है, इट शोज की कंपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग कर रही है, राइट? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट शुड गेट लो, राइट? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम से हाई ही है एंड कंपनी इतना तगड़ा रेवेन्यू भी नहीं दिखा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ इतना तगड़ा नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है बैलेंस शीट में, कि CWIP के बहाने मनी को ये लोग उल्टा सीधा चीज़ें दिखा रहे हैं, मनी साइफन ऑफ कर रहे हैं, राइट? यू वांट टू हैव CWIP as a percent of net block should be within reasons. Let me just see. Reason, and net fixed assets should also grow with them. Otherwise, the net block is just a facade. In ITC's case, the net block, this ratio seems okay, right? So this ratio tells me कि आपको कैसे एनालिसिस करना है कि कंपनी कितना नेट ब्लॉक में इन्वेस्टिंग कर रही है और वो फेक है या नहीं. Increase in sales and an increase in receivables, right? इंक्रीज इन सेल्स तो क्वाइट कॉमन है, वो बाद में देखेंगे, पहले मैं इंक्रीज इन रिसीवेबल्स देखूं. वेट, इंसर्ट recommended charts. Let's see. Dark blue. Formatting. No outline. And we have the receivables growth chart over here. Now fourth ratio we have गाइस, अगर अभी तक टिके हुए हो ना तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना. दिस रेशियो shows me how the receivables have grown over a period. Receivables are the sales made on credit and should not be growing year after year. Growing year after year. As a mature company, ITC has shown resilience in controlling its working capital and receivables part. Even though receivables एक working capital के part होता है, but still we need to add some commentary.
receivables. This ratio should be controlled according to the industry average. Right? So this was your fourth slide, Command D. Let's add another one. Now let's look at the auditor's behavior. Fifth, auditor's remark. But before that, I want to make sure कि auditor ने कभी कहीं resign तो नहीं मारा इनके साथ. Document auditor resign. No results found. Okay. ITC auditor resign. So the answer is no. कंपनी के ऑडिटर ने कभी रिजाइन नहीं मारा. नाउ लेट्स लुक एट द ऑडिटर रिपोर्ट. कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है. सो अगर एनुअल रिपोर्ट भी नहीं आती पढ़नी तो आप ठीक है. बेसिस फॉर ओपिनियन. In our opinion, to the as submitted, give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. So जो ऑडिटर का ओपिनियन होना चाहिए वो हमेशा अनक्वालिफाइड होना चाहिए. क्वालिफाइड ओपिनियन है तो इट्स अ रेड फ्लैग. राइट. लेट्स सी व्हाट द ऑडिटर फर्दर सेज. देयर हैज बीन नो डिले इन रेफरेंस टू. ठीक है. ठीक है. ओके. Annexure 1. The company has made proper record showing full particulars. Okay. ठीक है. All right. So I get the idea. There is no qualified remark. There is no qualified remark by the auditor in the annual report of 2023 FY23. The auditor has made enough judgments and analysis about the proper functioning of the company and there are no adverse remark either in the voice of the auditor himself. So auditor के remarks को हम यहाँ पे highlight करेंगे. Auditor himself. Auditors themselves, sorry, because it's an entity. Command C, Command V. Body 1640. Third, property, plant and equipment. Command C. Just a few 1414 calibre body, right? According to the information given to the auditor. No material discrepancy found and noticeable such verifications. Now this looks fantastic in my opinion, right? Okay. Let's see who the auditor is. SRBC and Company LLP. Images.
SR Bartley Boy, copy image, right? Picture format, picture effect, shadow. Okay, so let's go over here. Command C, Command V, Command V, right? Command V. So this was your financial accounting report, forensic accounting report for ITC. Financial performance, right? So let's quickly add some graphs, right? Sixth, अराउंड 7 पेजेस की रिपोर्ट बनी है एंड जो लास्ट पेज में है वो आपका खुद का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है अबाउट द एनालिस्ट. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट भी हो तब भी आप यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट लिखोगे. हेड ऑफ रिसर्च एट ग्लोबल कंसिली रिसर्च मैंने अपना लिखा है. सो अपने में आप ये लिखोगे कि आप कहाँ पे पढ़ते हैं, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस. सेल्स कमांड insert recommended charts, revenue over the years, news, this formatting, no outline, command X, command V, revenue, insert, shapes, तो थोड़ी सजा धजा देते हैं इसको. And this looks good. Revenue. Now let's look at the EBITDA. If we have the EBITDA, yes, we have. Insert. Just cut it down. And we have formatting, no outline, command X, so just this gives a good aesthetics. Now let's quickly do it for your net profit as well. Insert charts, recommended charts, we get it. Blue, let's color it blue.
net profits. Formatting your no outline, Command X, Command V. So Command Z, let's just drag it across and make it smaller. We have your EBITDA. Now let's quickly go for the operating cash flow as well. Last but not the least, operating cash flow, the most important part. Insert recommended charts. Command X. Now Command V. And we are done with the report. Yep, here we go. So I hope, sorry, the video was good and we have a wonderful forensic accounting report. Now how to save it? Simply press Ctrl P in your laptops and save as PPT, PDF, sorry. Copies one, PDF. PPT template by GCR, I'll save it as forensic report for ITC. Right, now let's quickly take a look at it in the preview. So कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट बन के निकलेगी. Right, I hope session was good. I hope you'll absolutely learn something and I'll see you in the next session. क्योंकि अगर फोरेंसिक एनालिसिस नहीं करा है folks, then you will not be able to make good money क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम मार्केट में होते हैं, खास करके माइक्रो एंड small cap space में. So folks, if you like the session, then kindly subscribe and do follow me on LinkedIn. Do send me a connection request over there and I'll see you in the next session. And I'll soon complete the financial modeling session as well. Thank you so much.